वेलकम टू खानवर्सेशंस। मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मेरे साथ एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने हिंदुस्तान की भी खिदमत की है, यूनाइटेड नेशंस में भी सारी दुनिया की खिदमत की है। डॉक्टर संतोष मेहरोत्रा, जो आज ही मतलब कल ही शायद इंग्लैंड पहुंचे हैं। वहाँ पे वो बाथ यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। इससे पहले वो जेएनयू में पढ़ाते थे, उसके बाद यूएनडीपी में काम किए कई साल, फिर उसके बाद इंडिया में प्लानिंग कमीशन से उनका ताल्लुक है। सो ही इज़ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द इंडियन बजट। उस पर पहले भी खुद भी काम कर चुके हैं। तो आज हम उनसे बजट के ताल्लुक से बात करेंगे, इंडियन बजट, व्हाट इट मीन्स, और सर try to unravel some of the mysteries around the bit. So welcome to Conversations. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत खुशी होती है आपके शो पे आने में मुझे। जी सर, पहली तो ये चीज बताइए कि ये फाइनेंस मिनिस्टर ने ये तो प्रेजेंट किया है, दिस इज नॉट द फाइनल बजट, इजंट इट? कि अभी इस पे क्या पार्लियामेंट में बहस होगी, एंड विल देयर बी रिविजन्स एंड विल देयर वोट ऑन इट? क्या ये फाइनल से है? नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर की ओर से ये फाइनल थी जी और पार्लियामेंट का कोई ऐसा अख्तियार नहीं है कि वो को उसमें रद्दो-बदल कर सके। थोड़ा जाहिर है, जो प्रतिपक्ष है यानी कि द इंडिया ऑपोजिशन, they will raise their voice as they are raising. The debate is currently going on. Uh, but it's a bit unlikely that the FM and the PM will actually change anything in response to the statements and speeches. In any case, I mean, they are not legally obliged to do so अच्छा because clearly a whole process of sort of nearly 2 months precedes the preparation and the speech and the allocation. Uh, no, unlike perhaps in the United States, you might be able to explain the US situation better. यहाँ ऐसा है नहीं, मगर चर्चा जरूर हो रही है। जी, इतना तो है जी। यूएस में ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट साहब प्रेजेंट करते हैं बजट प्रपोजल, और फिर वो कांग्रेस में डिबेट किया जाता है, एंड देन इट इज बेसिकली मॉडिफाइड, अमेंडेड या सपोर्टेड बाय द कांग्रेस, और फिर वो वोट करते हैं, देन इट बिकम्स द लॉ ऑफ द लैंड। तो जब तक कि कांग्रेस उस पर वोट नहीं करती, द बजट इज नॉट ऑफिशियल, बिकॉज अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बजट इज इन द हैंड्स ऑफ द कांग्रेस एंड स्पेंडिंग इज इन द हैंड्स। तो सर, लेट्स हिट द मतलब जो सबसे बड़ी चर्चा ये चल रही है कि इस बजट में फेडरलिज्म को उल्टा पुल्टा कर दिया है इंडिया के। और मैं आपको बताता हूं कि ये जो इंटरेस्टिंग एक आपको ये नजर आ रहा है ये स्लाइड? जी जी। हाँ, तो इन लोगों ने बेसिकली बजट लूट लिया है, दैट इज द थिंग गोइंग ऑन। इनफैक्ट शायद कल नीति आयोग में जो मीटिंग है, चीफ मिनिस्टर्स कई बाइकआउट भी करने वाले हैं कि इतना ज्यादा पैसे इनको दे दिए। आप कुछ समझ सकते हैं, समझा सकते हैं हमारे देखने वालों को कि ये व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ इट? मतलब ये $5 बिलियन है इस साल, और फिर और 2 साल तक इस तरह के वो पैसे देते रहेंगे। तो देखिए, proportion is in excess of what the population would legitimately justify जी for the two states. Bihar is about 120 million people, and if I remember correctly, Andhra Pradesh, after its division from Telangana, is probably half that population. So it's only the two together may not be more than 190 million of the 1.4 billion people. So that's sort of 1/7. However, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस समय सबसे बड़ी चर्चा इसी मुद्दे पे है कि भाई, देश में तो 28 राज्य हैं, अब आप दो को ही इतना दे देंगे जितना प्रॉमिस किया गया है, तो फिर बाकियों के लिए क्या बचेगा? और यही कारण है जो आपने अभी समझाया कि नीति आयोग, जो एक नाम के लिए फेडरल ऑर्गेनाइजेशन है,
जिसमें सारे चीफ मिनिस्टर्स को न्योता दिया जाता है साल में एक बार या 2 बार मिलने का, तो वो बॉयकॉट कर रहे हैं। तो ये मुद्दा तो बाहर भी हर जो भी राज्य है आंध्र और बिहार के अलावा वो हल्ला मचा रहे हैं, गैर गैर बीजेपी वाले शासित राज्य, और पार्लियामेंट में भी ये चर्चा निरंतर चल रही है, which is the reason that the Niti Aayog meeting of chief ministers, who are all part of its overall decision making body, are boycotting the non-BJP one. तो जी अगर आप ये देखें तो फॉर एग्जांपल ये जो 15,000 करोड़ आंध्र प्रदेश को जा रहे हैं, दैट इज ईयर मार्क फॉर अमरावती जो नया कैपिटल बनने वाला, यानी एक बाकायदा much more than that. I think it's over 50,000 crores for many other things included, and I think another 25 or 1,000 crores for Nitish जी. हाँ, तो नीतीश साहब के पास देख रहे हैं आप, एक ब्रिज के लिए उनको 26,000 करोड़, तो मैं लग रहा है कि ब्रिज इज मोर एक्सपेंसिव देन द सिटी, ऐसा लग रहा है इस बजट से। तो लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि अगर आप मिनिशिया में जाएं तो लाइक व्हाट इज गोइंग टू बी द अकाउंटेबिलिटी, वेयर विल ऑल दिस मनी गो, कुछ। Now you are asking a very good question, which the entire population of the country is asking, and Biharis are also asking this, as to why, I mean, on the issue of accountability, कि ये कैसे हो सकता है कि बजट के लगभग 10-12 रोज पहले 10 ब्रिज बिहार में गिर पड़े। तो it shows, speaks volumes for how bad is the quality of the construction. So quite clearly, though that issue has been raised as well, but there the clear responsibility unfortunately lies upon the Bihar government. So, but this is a central government budget. Every state has its own budget. तो इसमें तो दो राय नहीं है कि आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों की ही जरूरतें बहुत हैं, मगर मुद्दा ये है, जरूरतें ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि बिहार जो है हमारे देश का सबसे गरीबतम प्रदेश है, और आंध्र को जब 2014 में तेलंगाना और आंध्र के बीच में बांटा गया, तो उन्होंने अपनी राजधानी हैदराबाद खो दी, तेलंगाना के पास है अब वो। तो इस वजह से उन्हें लगता है कि उन्हें अमरावती एक नया शहर बसाना है, और बसाहट शुरू भी हो गई थी, but that had to be stopped when the government changed, when Jagannath Reddy became the chief minister, who's now demitted office after Naidu won this state assembly election. Anyway, मतलब जाहिर है वो आंध्र की डिमांड इस वजह से भी ज्यादा है कि तेलंगाना got a very significant portion of the total resources of combined Andhra Telangana, and so there is need for investment. Now, here is where the politics enters, meaning these are the two parties, the two governments whose parties are supporting the BJP to form the government in the center. So there is a sort of mutual dependence between them. Therefore, यही हुआ है कि एक्सट्रैक्ट कर पाए हैं नीतीश और नायडू साहब। जब वो एक्सट्रैक्ट करे उन्होंने किया, तो लाजमी था एक तरीके से कि बाकी गैर भाजपा राज्यों ने आवाज उठाई। जी, तो ये है पॉलिटिक्स इस समय। सर, ये तो खैर मतलब इट इज वेरी क्लियर कि ये पॉलिटिकल एक्सटॉर्शन है एक तरीके से, मतलब दिस इज द प्राइस ऑफ कोलिशन, क्योंकि ये इतना ज्यादा है, डिस्प्रपोर्शनेट है, इट इज रियली जंपिंग आउट, क्योंकि इनके डिमांड्स बहुत ज्यादा है।
ये दो स्टेट्स के। लेकिन अगर उसको छोड़ दें अलग, वी कैन अंडरस्टैंड कि ये कोलिशन पॉलिटिक्स की ये कीमत है, एंड यकीनन इसका मतलब ना सिर्फ मतलब मैं कांग्रेस के स्टेटमेंट्स देख रहा था कि जो ऑपोजिशन पार्टीज के लोग जो जिस स्टेट्स में हैं, जैसा कि बंगाल में ले ले या तेलंगाना में ले ले, कर्नाटक में, सो दे आर वेरी अनहैप्पी बिकॉज ऑफ द डिसप्रोपोर्शन। लेकिन मुझे लगता है कि जो बीजेपी स्टेट्स भी होंगे, दे ऑल्सो माइट बी वेरी अनहैप्पी, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश के, उसको कुछ उतना ज्यादा नहीं मिला। नो, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो भी अनहैप्पी है। देखिए, बात ये है कि राज्यों की दिक्कत ये है कि जब से 2017 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक नेशनल टैक्स जारी किया गया, लागू किया गया पूरे देश में, जी उसकी वजह से देश के राज्यों और केंद्र की 17 अलग-अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस जो गुड्स और सर्विसेज पे पड़ लगते थे, उनको एक मुश्त करके एक कॉमन नेशन वाइड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जी लगाया गया। वो एक सुधार अच्छा था, उसमें अपनी खामियां हैं डिजाइन की, उनके इम्प्लीमेंटेशन की, मगर उनको हम अभी अलग छोड़ देते हैं। जी सबसे बड़ी बात ये है कि इसका बहुत बड़ा असर ये हुआ डॉक्टर साहब कि केंद्र जो हमारे फेडरेशन में, वैसे संघवादी सरकार में वैसे ही काफी मजबूत बनाया गया था संविधान निर्माताओं द्वारा, फिस्कल डिवीजन ऑफ लेबर के तहत। तो जो सेंट्रलाइजेशन है वो और बढ़ गया है। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हमारा देश महाकाय देश है, 28-29 प्रदेश हैं, उसके अलावा यूनियन टेरिटरीज है, एंड अ लार्ज country like Canada, United States, Brazil, Germany, China, they are all ruled by state governments as well as by local governments. That's true in our country, but in some ways, no country, no federal country is as fiscally centralized. Now, so GST की वजह से जो 17 टैक्सेस, अर्स्टवाइल टैक्सेस खत्म हुए, उसकी वजह से राज्यों की को जो फिस्कल ऑटोनॉमी थी और खर्च करने का मादा था वो कम हुआ। जी अब कम हुआ और केंद्र के पास बढ़त हुई, तो फाइनेंस कमीशन ने, 15 फाइनेंस कमीशन ने एलोकेशन बढ़ाया राज्यों के लिए, फ्रॉम 32% ऑफ द टोटल tax revenues to 42%. About that happened about 8 years ago in 2015. However, currently जो रेवेन्यू सोर्सेज राज्यों के पास बच रहे हैं वो एक पेट्रोल, डीजल पे लोकल टैक्सेस, स्टेट टैक्सेस, और उसके अतिरिक्त एक जो अल्कोहल पे, जी हाँ, उसके अलावा जो लोकल बॉडीज के पास प्रॉपर्टी टैक्स, ये सोर्सेज काफी कम पड़ते हैं राज्यों। इस वजह से जो केंद्र आवंटित करता है हर राज्य को, वो उसकी अहमियत बढ़ जाती है, जी हाँ, और अहमियत बढ़ने की वजह से ये जो बंटवारा इस बजट में किया गया है आंध्र और बिहार को फेवरेट्स बनाते हुए, उससे नाराजगी पूरे देश के बाकी राज्यों में, चाहे भाजपाई हो चाहे ना हो। जी सर ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, दिस इज, वैसे जी सुनने वालों को बता दूं, ये सारे के सारे मैंने सीतारामन की तकरीर से लिए हैं, ये उनकी इंडियन गवर्नमेंट के ग्राफ से, ये मैंने नहीं बनाए। तो अगर आप जी इसमें देखें, जो एलोकेशन है स्टेट्स को, यहाँ पे कहता है स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटी सिर्फ 21% है। सो बाकी के सब सेंट्रली एलोकेटेड हैं। जी जी। However, I mean, let me add to that. जी Look to the left of the circle. जी, एक जो फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर, अच्छा वो भी स्टेट्स के लिए, वो भी जुड़ेंगे। तो अच्छा 21 और 9 वो जुड़ेंगे। हाँ और एक चीज और डॉक्टर साहब ये भी समझिए, आपके श्रोताओं को समझ, उसके ऊपर जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं 8%, वो भी, वही पैसा केंद्र से जाता है मगर राज्यों को जाता
अच्छा. हाँ. Then you add to the right central sector schemes excluding capital outlay on defense and subsidies. So capital outlay on defense and subsidies वो तो चलिए एक्सक्लूड करा जा रहा है, मतलब सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स भी उसके पैसे स्टेट्स में जाएंगे, स्टेट्स में अल्टीमेटली जाएंगे यूनियन लाइन मिनिस्ट्रीज को के द्वारा के थ्रू, which leaves essentially the interest payments, pensions, other expenditure, subsidies, and defense as part of the remit of the expenditures undertaken by the center. So there is a certain degree of fiscal decentralization in us. However, for a federation, even the fact that such a high that a share goes through central sector schemes, centrally sponsored schemes, through finance commission grants, and finally the share of taxes, the fact remains that some 40% of total revenues of the tax revenues of the country actually remain with the center. Now, which is still very high, given that their expenditures are largely on their own salaries, pensions, and interest payments for borrowings they have done. So that's an important dimension in the sense that if they were borrowing less, they would have to pay less interest. So that's one thing. So the other is defense is entirely in the hands of central. ये जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है 19%, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरेस्ट पेमेंट्स है. दिस डज नॉट इंक्लूड द स्टेट interest payments, जो states. Yeah, but I have to say that the center's fiscal deficit is higher. Let's say that the general government, center and states taken together, fiscal deficit is in the region of 8 to 9%. The fact of the matter is that center accounts for some 6%, and the remaining 2.5 to 3% is accounted for by the states. So the biggest borrower in our federation is still the center. And just to give you a sense, because this is all very directly connected to how much money the central government has. Let me recall for your viewers' interest that when this government came to power in 2014, the total size of the debt of the general government was about 55 lakh crores. General, please remember, I've already stated it, center and states taken together. So 55 lakh crores, of which about 40 was center and 15 was states. But the center's borrowings in the last 10 years have shot up from about 45 lakh crores to 165 lakh crores. That's a more than tripling. 400%. Yeah. That's a huge, exactly. That's a huge increase. And in some ways, this is due to, and I think this is relevant to the budget, this is due to several factors, with some of which I will now name. That if the economy's growth rate is slowed by economic policy shocks delivered by the government, then the revenues generated by the central government, or for that matter by the state, are going to be reduced. So we know that the growth rate in the last 10 years has fallen to 5.8% on average, while in the preceding 10 years under Dr. Manmohan Singh's government, the growth rate was 7.8%. So this is one reason why revenues are low. Second reason why revenues of this government have been lower is that they cut corporate income tax rate from 30% to 25%. And the third is that the GST, which replaced those 17 taxes, have now, after 7 years of the implementation of GST, just about as a proportion of GDP, reached the level where they used to be pre-2017. So in सब वजहों से केंद्र सरकार के जो
बोरोइंग है, डेट है, वो काफी बढ़ी है और केंद्र सरकार काफी खर्च करती रही है सब सब्सिडीज पे और वेलफेयर प्रोग्राम्स पे. और इंफ्रास्ट्रक्चर पे. It has been a problem because in the following sense that it has reduced its expenditure as a proportion of GDP on health and on education, in which the country lags very severely. जी. अगर आप ये देखें जहां से सोर्सेस हैं, जो सबसे बड़ा सोर्स है इज बोरोइंग. 27% इज बोरोइंग. जी, वही उसके तो. जी हाँ, और उसके बाद इनकम टैक्स. कहते हैं कि सिर्फ 2% लोग इनकम टैक्स देते हैं, ये सैलरीड क्लास लोग. तो जी. जो जो नौकरी करने वाले लोग हैं, दे आर पेइंग मोर इनटू द गवर्नमेंट देन द कॉर्पोरेशंस. वो कॉर्पोरेशन 17% है सिर्फ. Uh, right, right. of the टोटल of बजट. the revenue. जी हाँ. Right. Yeah. So personal income tax 19% of revenue, corporate income tax 7 plus 17, so that takes you to 36%. But that tells you something else, that 100 minus 36 64. जी. is still coming from GST and ये and सिर्फ the remaining sort of 18%. जी हाँ, दूसरे कस्टम्स वगैरह जो लगाए हैं, जीएसटी इज गिविंग ओनली 18%. तो no, but you see that the point is the indirect taxes, the remainder are indirect taxes. जी हाँ. Union excise duty, that's indirect. GST and other taxes, indirect. जी. Uh, and so you have to add those two. And then from the 100, you've got to take out the customs, that's about 4%. So the real issue is you sort of add corporate tax 17, income tax 19, that's 36. जी हाँ. But the indirect taxes are बात GST. 27%. जी हाँ. That's exactly. So that's 18 plus 5, 23. Yeah. So it's less, but the GST share is very significantly rising, and that's a real problem. G. सर, ये बजट It's a good thing, however. Let me just finish by saying जी. it's a good thing, however, that CIT and PIT's contribution to government's revenue is now slightly more than that of indirect taxes. I mean, why is that good? Because direct taxes impact the middle class and the upper middle class and super rich, जी. while union excise and GST and other taxes actually impact the vast majority. जी हाँ. And we don't want the incidence falling in the vast majority. हाँ, मतलब जो भी कोई भी चीज खरीदता है, दे पे टैक्सेस. तो ये जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी, ये कहते हैं, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग हाउ दे प्रेजेंट. कहते हैं फोकस ऑन 4 मेजर कास्ट, और उन्होंने औरतों को कास्ट बना दिया, फार्मर को कास्ट बना दिया. आई थिंक समबडी, मजाक बिल्कुल, इट वाज वेरी बैड. बट ये कह रहे हैं कि आई मीन वन ऑफ द क्रिटिसिजम्स दैट आर, और क्रिटिसिजम्स तो नहीं, कमेंट कर सकते हैं कि दिस इज ए redistributive budget. This is more like a socialist budget than a right wing budget. तो इसमें बेसिकली टैक्सेस बढ़ गए हैं. जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों कैपिटल गेन्स पर टैक्सेस बढ़ गए हैं, और जो 7 लाख के ऊपर शायद जो कमाते हैं, उनका भी इनकम टैक्स रेट अगर आप देखें वो बढ़ गया है. So there is more taxation, customs bhi बढ़ गए हैं, so people who are importing foreign goods, especially luxury items, and then there is a lot of welfare schemes, ये jobs creation schemes जो आप देख रहे हैं. तो basically अमीरों से पैसा लेकर जो है, सो खासतौर से अर्बन जो पॉपुलेशन है, जॉब्स वगैरह जो करते हैं, तो उनसे पैसे लेकर जो अनएम्प्लॉयड हैं उनके तरफ स्किलिंग्स, इंटर्नशिप्स वगैरह पे खर्च कर रहे हैं. सो डू यू थिंक कि दिस इज ए मेजर शिफ्ट इन द इकोनॉमिक आइडियोलॉजी ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट, या दिस इज जस्ट पैच वर्क, मतलब दिस इज जस्ट नॉट इनफ, इट इज लाइक इट्स मेकिंग, मतलब दिखाने का है, या वाकई में इसका असर होगा? Dr. Saab, the size of the employment crisis is so huge, the dimensions of which I will now spell out, that this is still scratching the surface.
because most of the welfare schemes uh, on which a lot of money is already going actually are outside of what has been uh, talked about in this budget. What do I mean by that? Outside of our Pradhan Mantri Awas Yojana, meaning the rural housing plus the urban housing has allocations increased. Secondly, there is um, the Nal Se Jal, which is the water provision by pipe through pipe water. Yeah. Then there is the sanitation. There is the gas. Then there is the PM Kisan, which is the 6,000 rupees a month, a year allocation to all owner cultivators. So there's a lot of this uh, payout of this kind on these kinds of schemes. जी. In addition, ये जो लाभार्थी स्कीम्स जो कह रहे हैं आप, Labharti, you are right. That's of course in addition, meaning there is the free cereals on which there are food subsidies there. There is the fertilizer subsidy. So there is all of that, and that is taking up a lot more money than this government has allocated for either health or education, or for the integrated child development scheme, or for midday meal scheme, and this is a real problem because in the last 10 years, uh, the general government's allocation as a proportion of GDP on health has remained constant despite the intervening pandemic. और उसके अलावा जो education expenditure as a proportion of GDP, general government, which used to be for 2004 to 14 about 4%, is now down to 2.9%. So these are the problems, and these are trade-offs. You spend a lot of general government resources on many of these subsidies and freebies and welfare programs, but then you don't make the long-term investments in health and education and the nutrition of our population, which is highly problematic. And that's a problem also because these health and education ought to be much bigger priorities for ensuring that India becomes a Viksit Bharat. There are question marks about whether India will become a Viksit Bharat in 24 years because of a macro view about the economy. So about the GDP growth rate, about which let me say a few words because your readers or viewers must understand this. It's as follows. Viksit Bharat in India is going to be 100 in 2047. Between now and then, if India grows at only 6.5% as it has been growing, less in fact, for the last 10 years it's been 5.8, India cannot generate the job. Yeah. Second, you compound 6.5%, 7% for the next 24 years. India will at best, from its current per capita dollar income at market exchange rates of $2,800, will at best reach about $14,000. $14,000 in 24 years does not make you a high income. That the World Bank categorizes all the countries of the world in 4 categories: low income, low middle income, upper middle income, and high income. Now, India until 2007 used to be a low income country with a per capita income of less than $1,100 at market exchange rate. Per capita income now is $2,800, and that puts it in the LMIC category, low middle income, and that goes up all the way up to 4,400 USD. Yeah. The upper middle income category has the biggest band from 4,400 to over 14,000. Yeah. So at best, if we grow at
7% per annum over the next 24 years, we will achieve no more than $14,000. That's, I mean, 33% less than the UK is today. And UK is one of the sort of poorest countries in the Yeah. OECD. So we have to remember this, that it doesn't make us Viksit Bharat. India can remain, can be at that level, can reach a high income status only if we grow on average for 24 years at 8%.